बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर बशारत उल्लाह मलिक साहब। और आज के एलुमनाई हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर फादिया। डॉक्टर फादिया इज़ अ मदर, अ प्रोफेशनल, अ ट्रेनर, अ कंसल्टेंट एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल। आज की स्टोरी यंगस्टर्स के लिए तो है ही है, बड़ी इम्पॉर्टेंट। हमारे जो यंग फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्ट टू नो हाउ टू मैनेज देयर लाइफ इन ऑल अटायर्स। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं अपने गेस्ट का और बशारतुल्लाह मलिक साहब का। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एट द स्टार्ट हम सबसे पहले जाएंगे बशारतुल्लाह मलिक साहब की तरफ। बशारत साहब, मुझे बताइएगा कि एकेडेमिया और जॉब, ये जो कैसे मैनेज किया जाए, इकट्ठा सारी चीज़ें साथ साथ कैसे मैनेज की जाए? आपका मतलब है कि पढ़ना और जॉब? या ये मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैंने भी ऐसे किया था, लेकिन डॉक्टर फादिया से आप ज़्यादा पूछ बशारत साहब, करना चाहिए ये बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज जो आपके एजुकेशन है वो तो ख़त्म नहीं होती। वो कहते हैं इल्म हासिल करो पालने से लेके कब्र तक। तो फॉलो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर फादिया खालिद, she has done the same thing and I think she will tell you that how she did it. मैं शायद इतना वो हक अदा नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप एक एक्सपर्ट हैं तो आपका ओपिनियन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम पहले एजुकेशन मुकम्मल कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एंटर हों। यही गलत बात। पहले एजुकेशन कंप्लीट करना, उसके बाद मैं तो कहता हूँ अगर 20 साल का बच्चा हो गया तो वो शादी कर ले। अच्छा, हाँ, आपने यानी कि एक और प्रॉब्लम उनको पढ़ा। हाँ, उसको आप प्रॉब्लम कहते हैं, मैं उसको एक किस्म से वो कहते हैं फैसिलिटेशन कहता हूँ कि ही विल गेट समबडी टू हेल्प हिम और शी विल गेट समबडी टू हेल्प हिम। एक को ड्राइवर मिल जाएगा, दूसरे को कुक मिल जाएगा। और आप देखें ना कितना फर्क पड़ता है। मेरी एजुकेशन जो है वो शादी के बाद थी। अच्छा। और 3 बच्चे थे। अच्छा, माशाल्लाह। और जो मैंने अच्छी एजुकेशन की है अभी तक वो आफ्टर द मैरिज थी। अच्छा। और उसमें जितने अच्छी परफॉर्मेंस मेरी आफ्टर द मैरिज है वो पहले नहीं थी। तो बच्चों के साथ 3 बच्चे थे, वो मेरा रिजल्ट देखने आते थे। हाँ, अजहर इकराम साहब हमारे प्रिंसिपल थे, आप जानते हैं प्रोफेसर अजहर। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा बशारत शाम को क्या कर रहे हैं इधर ये बच्चे और तुम्हें? मैंने कहा मैं सेमेस्टर का रिजल्ट देखने आया हूँ। तो मुझे कहते हैं पहले तो माँ बाप जाते थे बच्चों का रिजल्ट देना, बच्चे देखने आते। दिस इज हाउ द लाइफ इज, वन शुड बी प्रिपेयर्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि आप इल्म हासिल करो पालने से लेके कब्र तक। और दूसरी बात यह कि मोर यू गेट मैच्योर, मोर यू स्टार्ट लर्निंग मोर। जो एजुकेशन बंदे को असल समझ आती है सर्विस करने के बाद, जॉब करने के बाद और जॉब करते हुए, वो पहले नहीं आती है। तो इमेच्योर बच्चा होता है, वो तो रट्टे मारने की तरफ जाता है, तो वो उसको रिलेट नहीं कर सकता लाइफ के साथ। तो आई विल सजेस्ट कि शादी जल्दी करो, जॉब भी करो और साथ एजुकेशन करो। और एजुकेशन ख़त्म नहीं होती, एजुकेशन ख़त्म नहीं होती। बशारत साहब की राय बड़ी ज़बरदस्त है, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि आपने ख़त्म किया और उसके बाद ज़िंदगी को शुरू किया, ऐसे नहीं है। यू हैव टू गो ऑन, टेक इट विद द प्रोसेस। तो मैं अपने आज की गेस्ट की तरफ चलता हूँ, डॉक्टर फादिया खालिद। डॉक्टर फादिया, गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ी हैं मैंने सुना है, और वो स्कूल जिसके अंदर जो है वो वाइट शलवार कमीज़ और आपका पिंक दुपट्टा और वो उसमें, और माशाल्लाह यू आर सक्सेसफुल। बहरीन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही हैं, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही हैं। तो कभी ये आपने सोचा था कि आप इस पोजीशन तक इस अंदाज में पहुंच जाएंगी? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई रियली अप्रिशिएट दैट, and I think that your purpose of encouraging others to continue their journey is really what I value. Yes. And that's why I'm sitting here. Yes. Tomorrow I'm flying back and I have not done my packing. And we're very much thankful to you. And I'm not done but you spared your time and very busy. And I think the only purpose is to encourage everybody that they can achieve in their life whatever they want to. Yes. I think we started off with your statement of your question of work-life balance, and I think that's a question that everybody should ask themselves. That how do I keep a balance between my work and my life? And that's why it is important that you
you work towards something that you really like, you're passionate about, then it becomes more of a fun and excitement rather than okay, I have to work to earn my life or to earn my livelihood. So ये बहुत important है, keep the work-life balance, और वो हर एक को रखना चाहिए. और in terms of you were saying about education and at what time? Yeah, what happens is quite often people look at life as a horizontal one direction pathway. It's a flow chart that goes one after the. It is not. It is dynamic. It is diverse. You will have ups and downs and right and left, and you would say, I end up at a place where I never wanted to be. Because if you're thinking about life as a one step and the next step, sort of one direction, it is multi-direction. Okay. I remember there was a time when I was growing up, people would say कि अच्छा इसकी शादी कर दो, 18 की हो गई, 19 की हो गई, and at that time, because you hear from people around you the same thing, you say, okay, हाँ यही मेरी ज़िंदगी, and then I got married, and after some time, obviously you have ups and downs in your life, in your personal life, and with people around you. So I said to my dad, I remember saying that अब तो कुछ और भी अंधेरा है, ये मेरी रात का सवेरा, and then my dad said, oh. So he realized that it is not that okay, बस अब शादी हो गई तो now everything is fine, and it doesn't mean that it doesn't mean that it was not a bad experience. The point here is कि ज़िंदगी में ups and downs आते हैं. आपने क्या करना? How do you react to it? That's your take on it. कि मुझे क्या करना है? So you have two options. Either you become a victim of those circumstances, or you say, no, I'm going to stand up. You rise up again and again and again and again. That's what we call resilience. So आपके पास resilience हो, and then वही बात जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, वो थोड़ी देर बाद आपको बहुत okay लगती है, because you're looking at it from their perspective. Empathy, that's also very important. So जब आप उसको उस नज़र से देखते हैं, so rather than I thinking about okay, I didn't do that or I didn't get it, you think about the other person or the other family member कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं, उनकी भी expectation, then things become easier. And the third thing, which is the most important thing, is your North Star. What is your North Star? Where are you heading towards? What is the end you want to meet? So आप कहते हो कि चलो अब मेरे पास हर सीज़न के लिए इतने सारे पैसे हैं कि मैं नए कपड़े लूँ, गाड़ी में फिरूँ, and that's what I want. Or you want something else. What is it that you want from your own life? What is your purpose of life? So if your North Star, your purpose of life, and the ethics are in line, then whatever happens, you will again rise up and you will again resiliently continue to do what you want to do. So brilliant, Zabardast. You have to continue, you have to focus on your North Star, you have to जब आपका डाउन टाइम्स हैं तो empathy would be the best thing. आपकी motivation, आपकी resilience बड़ी उसमें आएगी. तो यहाँ मैं बिशारतुल्लाह मलिक साहब की तरफ जाऊँगा. बिशारत साहब, ये resilience कैसे आती है? रेजिलियंस तो हालात सिखा देते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए. यस, रेजिलियंस इज समथिंग, वो जो लोगों की आदत होती है ना कि कुछ गड़बड़ हो गया तो साथ ही हथियार फेंक दिए और घबरा गए. ये घबराना छोड़ दें, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वक्त बुरा आता है ये थोड़ी देर के लिए आता है, फिर ये बदल जाता है. अच्छा भी बदल जाता है तो बुरा भी बदल जाता है. और इत्तेफाक से बात ये है कि आई हैव सीन हर very closely. Yes. How do you know? By the way, how do you know her? Interaction कैसे हुआ? Interaction तो ऐसे ही हुआ कि जैसे टीचर का स्टूडेंट से होता है. And she was in the class. I noticed her brilliance. I noticed that she is much more than a normal student, and that noticing led to so many things. And when she did not have a job at one time, I think I had the honor to introduce her to one department, that is Directorate of Staff Development, where I had started training over there. I knew that she will do wonderfully. I introduced her and she did wonderfully. Yes. And her आपसे ज़्यादा भी trainings मैंने सुना है. मेरे से ज़्यादा कराई और मेरे से ज़्यादा पैसे कमाए और मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हुई और मेरे से ज़्यादा नाम कमाया. और मैं जाके प्रमोट कर रहा था इसे. मैंने क्लास में एक दिन कहा, वो क्लास तो नहीं, ट्रेनिंग थी, तो टीचर्स थे सामने. मैंने कहा कि अभी आपको एक आध दिन में एक फादिया आएंगी, एंड यू विल रियली एंजॉय हर लेक्चर, एंड
वो ट्रेनिंग जो कराएंगी, तो वो इत्तेफाक से वो पहले कर चुके थे ट्रेनिंग। तो एक ने कहा कि सर वो आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ नहीं हाँ है, बेटी है, स्टूडेंट बेटी होती है। yes. तो मैं कहा हाँ है। कहता हाँ सर वो आपकी शक्ल बड़ी मिलती है। अब मैंने आज चेक कराया, मैंने कही शक्ल भी मिला दी। मैं कहा क्या चीज़ मिलती है? कहते ये आपकी आंखें। उनकी भी आंखें। मैंने दूसरे दिन जब मैं मिली, मैंने कहा फादिया मेरी तुम्हारी आंखें कैसे मिलती हैं? मैंने कहा सर मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं। तो वो अजीब लगती। खैर ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि लोग बात करते हैं कि यू शुड गेट कनेक्टेड, वो कांटेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, टीचर का। मैं कांटेक्ट से अगली बात कहते हैं कि यू शुड बी गेट कनेक्टेड, एंड दिस इज द कनेक्शन कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू हैव कम? 12, 30? To Pakistan? No, to us. अब आपका समर 2010 के अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव खत्म हुआ था, तो 2011 I was working here, so I left UCP as an employee in February 2011, so 2012. 2012. फिर आपने प्रोग्राम मैनेजर यहाँ ज्वाइन किया. One thing also, she has come after 10 years. Yes. And throughout these 10 years we were in contact with each other. Yes. चाहे फेसबुक से ही हो, और मैं बार बार उसको मैसेज पिछले 2 साल से कर रहा था कि फादिया व्हेन यू आर इन लाहौर प्लीज कांटेक्ट मी, मैंने इस इंटरव्यू में लाना है आपको. यस, और इससे हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं. जो है ना कांस्टेंट टू, क्योंकि डॉक्टर फादिया जैसे हमने बहुत से ज़बरदस्त लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं. नो डाउट कि आज की स्टोरी इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त है कि आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड किस अंदाज में शी मैनेज्ड एवरीथिंग, लाइक जॉब, एजुकेशन और साथ में फैमिली, इन-लॉज, फैमिली, 3 बच्चे हैं, एवरीथिंग. और माशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है. फादिया आपने 3.99 CGPA भी लिया, मतलब इट्स नॉट लाइक कि एवरेज स्टूडेंट है. शीज so I think that's another important thing on that 3.9 CGPA. Yes. Was that when I was when my name was announced and I was standing there to receive my award and gold medal, I requested my dad to be there, my dad and mom, and everybody else was there. But I knew that everybody who is sitting there, especially for MBA morning or executive or afternoon, they had not been sitting there if I had not done my job, because I was the MBA program manager at UCP. Right after I completed my own industry project here, and in that time I covered a backlog because their projects were not completed, and that graduation would have not been happened. Yes. Because obviously jab tak aap apna industry project nahi karte, research work nahi karte, you cannot reach there. And because of another fact that my dad had got sick, very sick, when I was 17. So in that time also I was and I started training. I used to give people, there were doctors and juniors sitting there, I used to teach them how to use this dabba which is called PC. उनको तो ये भी नहीं पता था कि on कैसे होता है. So in the evenings I used to give them trainings on that, orientations, and in the morning I was a student of a Bachelor's of Computer Sciences at that time. So over those years I never thought that I'll be able to, or I'll be able to fund myself, I'll be able to find time to do my doctorate. So at that time in that graduation ceremony, that was really so dear for me, because I was, at that time I was a student graduating and also I was an employee of UCP. As an employee. और अच्छी बात यह है कि आपने अपना जो जितने भी फाइनेंसेस हैं वो भी साथ साथ खुद मैनेज किए हैं सारे. Yes. और ये बड़ी एक इंस्पिरेशन है हमारी यंगस्टर्स के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फाइनेंसेस आपके वालिद साहब और हस्बैंड करें. ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट तो लाजमी है, मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये जो आपने हिम्मत की और अपना डॉक्टरेट करने में यूके से जो आपने किया वो आपने करने में भी इतना आपने फाइनेंसेस खुद पे किए उसके अंदर. दिस इज़ वंडरफुल. मुझे फादिया इसमें ये बताइएगा कि I want to ask this one thing to you. When I say I have 3 letters for you, so I want to know what comes to your mind. The UCP. Yeah. University of Central Punjab. Anything, any feeling or anything associated with it? About UCP? Yeah. There are many good things about UCP.
and I see them because I'm an educationist दूसरी myself. चीज़ें भी बता सकती हैं. Yeah. This is my honest perspective, and I see it from when I'm saying it. First thing is that the way their assessment was structured, it was not only relying on solely on the content. So it was about a lot of skill development. That's very important in terms of communication, in terms of organizing your ideas. These are the ones that make you employable. So those employability skills, I know that I'm not aware of it if you have any framework related to that, but there was a very continuous reinforcement of different soft skills, which by the way, I say that, and I've read it somewhere also, that there is nothing soft about these skills, because they are highly important. They are power skills. Now they are called power skills. So so there was a lot of focus on that in our MBA program at that time. I really don't know how things are now, but at that time the assessments were structured in a way that the all problem solving skills, communication skills, teamwork, you have to work with people you like or not. So I remember my industry project, my final project was of 16 people, and I knew only 2 out of them, and everybody else was from morning, and we had to do a project that was providing training to traffic wardens. So we were responsible to initiate the training, to close the training, to organize it, and again also to develop the materials. And I had to be the lead of that team, and they were young people. I've never seen them, they have never seen me, and they said, who is she, why is she asking us to follow her? So getting people together. I used to use cafeteria, and I used to sometime order tea for them to make them sit together. And so there were 4 different chunks who were working together, and it was a lot of fun, and at the same time it was a lot of experience to get things done from people you have no authority on. And I think that's a skill. As a boss, you have authority, you get things done. But in this case, I had no authority on them. But then I had not been able to do it. And you're still connected to many of them? I am connected to some of them. Some of them? Yes, that's some good. of them, yeah. And that's really good. यहाँ से मैं बशारत मलिक साहब की तरफ जाऊँगा. सर, क्लोजिंग की तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं. मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर फादिया की लाइफ से आप क्या समझते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को क्या लेसन लेना चाहिए, क्या पहले क्वेश्चन किया था रेजिलियंस. यस, रेजिलियंस इज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस. यस, एंड वो वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात हो गई, और किसी चीज़ से जुड़े रहना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन द प्रोफेसर्स of Kamyab College. Unluckily or luckily, the subject was not related to me. It was more with the education, and Fahdia was very good in that. I requested her, we went there, and the way she connected things, connected the dots, and the way she handled the situation, I was more of an observer over there. तो मुझे उस वक़्त ख्याल है कि ये तो एक एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्ची है, और वो चीज़ मैं ये नहीं कहता ये मैंने सिखाई, ये मेरा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन किसी के अंदर कोई सलाहियत तो उसको काम लेना तो फिर मेरा क्लेम हो सकता है. We had been doing things at different places. She had her own area, I had my different area. लेकिन उस वक़्त भी ना एक तो रेजिलियंस तो बात हो गई, दूसरा ये है कि वो इंटेलिजेंस टू कनेक्ट द थिंग्स कि ये बात कहीं कुछ है, उनका मिशन और विजन कुछ है, क्या कुछ रहे हैं, उसको जोड़ के उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताना. दैट वाज समथिंग रियली गुड. तो शी इज़ वेरी गुड एट दैट ऑल्सो, एंड दिस इज प्रूव नाउ. शी इज़ अ PhD नाउ, and she is working over there in Bahrain, and she has got a good name over there, and she is such a good name that today, rather I was requesting for this last 2 years, फादिया लाहौर आना तो मेरे से बात करनी. और आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर फादिया बहुत इज्जत से नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं मेरी तो बच्ची जैसी है ना, मैं तो ऐसे ही बुलाता हूँ. तो और कभी आप जनाब करके भी नहीं बुलाया, तो लेकिन ऑन द होल शी इज़ रियली रिस्पेक्टेबल, एंड आई रियली एडमायर हर. एग्री. लास्ट में मैं डॉक्टर फादिया आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो आप अपने ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई वांट टू पोर्ट्रेट देम इन दिस मैनर कि जो आज की
फादिया हैं, I hope you understand this. Yeah, go ahead. तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? मतलब they are having those thoughts which you had on your mind at that time, and you can understand this very well because मैं नहीं इसको comprehend कर सकता. I can say हाँ ये struggles हैं, लेकिन there is some sort of fight all the time, in the mind. तो वो उससे क्या आप गाइड कैसे करेंगे कि how to overcome them? क्या करना चाहिए, किस अंदाज में, ताकि ये I really like this model जिसमें शादी और बच्चे और प्रोफेशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग माशाल्लाह गुड, एंड अल्लाह ताला इसमें और बरकतें अता करे, एंड आवर प्रेयर्स आर विद यू. तो आप बताइए. So if I want to give a message to youth and girls especially, what I've noticed is that the first thing is that when you are growing up, you're studying, you don't know what are the options you have. So career pathways easily nazar nahi aate hame. So you have to see what are the career pathways you can possibly have. I remember I used to say when जब छोटी थी कि मैं I want to go on the moon, I want to be an astronaut, and then I knew that I want to be a newscaster because she knows everything. So that was when I was in before grade 10. But when you are progressing, you are knowing about the world. अभी सब लोगों के पास phone है, you know things. You need to have a clear idea what you want to do. It is absolutely fine if you decide to be a dentist, or if you decide to be a newscaster, or any profession that you have an inspiration in your mind, and then you hold on to that. Once you have a hold on to that, then irrespective of the fact you are married or not, irrespective of the fact you have children or not, it should not stop you anywhere. And with ladies also, another thing is quite often, maybe for boys also, because I'm not a man or boy, so it's for everybody. Sometimes people think that brain and beauty cannot coexist, so you have to show that it is possible. And then so once you know what you want to do in your life, and then whatever happens around you, that becomes your North Star. And then in terms of for girls, try to take ownership and take responsibility. ऐसा नहीं है कि अब फेल हो गए तो आप बोलें कि आपने मुझे सुबह नहीं उठाया था, आपने मेरे कपड़े नहीं इस्त्री कर दिए थे, या मम्मी ने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया था. No, we have to take the responsibility of whatever happens to us, because whatever happens to us is because it's our life, it's our own test. You cannot put things on us. So being responsible and have a clarity on your North Star will help you. And then ask yourself, Allah has brought you to the world with a reason, और वो reason क्या है? वो reason especially I remember those highly effective people habits. So आप सोचते हैं कि Stephen Covey. Yeah. How do you want to be remembered? आप कैसे याद रहना चाहते हैं? I remember I used to pray that I want to be a best daughter in the world, and then now obviously when I was on Umrah, I was praying that I want my औलाद to be my sadqa jariya. जब मैं चली जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी नेकियाँ जो हैं वो यहाँ रहें. So वो जो आपका नॉर्थ स्टार है, that helps you organize rest of everything else. और बहुत मुश्किलें आती हैं. There are people that I know जिनकी फैमिली में sometimes उनके husbands के साथ, उनकी people around them और उनके बच्चों के साथ भी struggle होती है. कभी कभी तो ये होता है कि I remember I used to study in the store जहाँ पे पंखा भी नहीं होता था, and साथ वाले रूम में my siblings used to play their music and are sleeping, और मैं उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी. और जो फोर्थ रूम था वो थोड़ा दूर था, and I used to feel scared. So you know you want to study, so you will sit in the store, you will sit at night wherever you would want to sit, and you will study. So आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है नॉर्थ स्टार. And also coming back to the skill part, अगर आपको स्टिचिंग अच्छी लगती है, आपको कारपेंट्री अच्छी लगती है, आपको कोई भी स्किल आपको अच्छा लगता है, just do it in a way that nobody else can do. So what is your impression on that? What is your stamp on that? इसलिए बहुत important है कि आप वो रास्ता लें जो आपको पसंद है, and then you are able to leave your own mark on that. Being a male. This is wonderful, very wonderful message. What I have understood from all of this discussion and our alumni guest and our expert Professor Basharat Malik Saab, resilience is very important. Motivation is important, empathy is important. आज मुझे एक नया पर्सपेक्टिव इस हवाले से मिला है
कि एजुकेशन, जॉब, ये जो चीज़ें हैं ये आप एंड नहीं है। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ वाले लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात फादिया ने की है, जो आपका नॉर्थ स्टार, आप उस पर फोकस करें, अपने विजन पे फोकस करें, और अपने आप के ऊपर फोकस करें। व्हाट डू यू वांट टू डू? आई रियली लाइक द वे शी पोर्ट्रेड एंड प्रोफेसर बशारत मलिक सेड कि ऑनरशिप लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और फिर देखें कि ग्रेट थिंग्स विल हैपन। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को एंड करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गेस्ट डॉक्टर फादिया का और एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बशारत मलिक साहब का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। देखते रहिए प्रोग्राम कामयाब। नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।